Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in this video session, we will be discussing class-based requirement analysis. Previously, we discussed scenario-based requirement analysis. This is a very short video as because you are too much aware of this class-based modeling as you have been doing the using these classes and properties etc whatever in the OOP course. So class-based modeling represents objects that the system will manipulate, operations also called methods or services that will be applied to the objects to effect the manipulation. The relationship between the objects is somewhere hierarchical and collaboration that occur between the classes that are defined. So we have done the same thing when we discussed when we have studied when we were studying object-oriented programming. So we have done the same thing. We had created classes, we have instantiated objects, there were operations defined, methods defined for each class, and there were relationship between the objects, and there were collaboration between multiple classes when one class can call the object of the other class, etc. So elements of a class-based model include classes and objects, attributes and operations. CRC model, this is one thing which we are going to have, we'll discuss in this case when we are going to represent the requirements through classes. So CRC model are used normally for formally representing the requirements uh, using classes and objects. Okay, collaboration diagrams and packages. So class-based modeling identify analysis classes by examining a problem statement. So how to start class-based modeling? You have a requirement document, you have a requirement description. So the analysis classes are identified by examining the problem statement, the set of requirements given by the client. You analyze those requirements, you analyze those descriptions, and try to identify the classes and objects. So use a grammatical phrase to isolate potential classes. Normally we use nouns and pronouns that you identified as classes. Identify the attributes of each class. These are also present there in the requirement description, and identify operations that manipulate the attributes. So we have to identify all these things from within the requirement description given by the client. So it could be external analysis classes could be external entities, for example, a printer, a user, or a sensor. Things like report, display, or signal. Occurrences or events like alarm, telephone call. Roles like manager and clerk. Organizational units like accounting department, R&D, etc. Places like building, manufacturing floor, etc. And structures like employee records. All of these could be considered as classes whose objects and attributes and operations need to be defined further. Class CRC model is actually class responsibility collaborator. It provides a simple means for identifying and organizing the classes that are relevant to system or product requirements. So identifying the classes are represented through cards. In a CRC model, the classes are represented to specific cards. Uh, for example, a CRC model is really a collection of standard index cards that represent classes. The cards are divided into three sections. Along the top of the card, you write the name of the class. In the body of the card, you list the class responsibilities on the left and the collaborators on the right. You can see these index cards. So on the top, you have the name of the class. On the left column, there is responsibility. It defines floor plan name, manages floor plan positioning, scales floor plan for display. And you can, through these responsibility descriptions, you can easily identify the attributes and the operations that manipulate those attributes. And right collaborator, which is wall, camera, etc.
Okay, so the collaborators are on the right. Okay, so class types in CRC, there are three types of classes. Entity classes, also called model or business classes, are extracted directly from the statement of the problem. As we have discussed, a list. These are the entities which can be extracted. You can see many entities which can be extracted from the description of the requirements. Then boundary classes are used to create the interface and that the user sees and interacts with as the software is used. So entity classes or model of business classes are the one which are identified from the statement of the requirements description, and the boundary classes and also the control classes. These are the classes which are used to which are not directly identified from the user requirement description, but actually these are part of application development. These are they are required to develop the application. For example, for a system to be developed, there are functionalities that need to be fulfilled, but you need an interface, an interaction trigger through which user will use those functionalities. User will perform the tasks that were given in the requirement description. So how the interface will be defined? There will be some classes which will be representing, which will be defining the interface or interaction between the user and the system, so that the user can perform the task, user can fulfill the use the functionalities given by the system. Similarly, there are controller classes. They manage a unit of work from start to finish. That is, controller classes can be designed to manage creation or update of entity objects. So this is what somewhat technical details, technical things needed to develop an application. So they are not the requirements given by the user, given by the client. These are the things which the development team, we require to implement the system, to build the application, to develop the application. So these are the things which are on the technical side needed. These classes are need to be developed, need to be defined to fulfill to develop a relationship between the functionalities, and to handle the operations and operations between the entities. So the creation or update of entity objects, the instantiation of boundary objects as they obtain information from entity objects, complex communication between sets of objects, and validation of data communicated between objects or between the user and the application. So these are somewhat technical aspects and technical requirements that are not given by the user and that are not required by the user actually, but we need to take care of these things so that the application works successfully. So boundary classes and control classes are identified by the development team as a need of the application development. Interaction or interface uh, designing, classes which define the interface and interaction, and classes that control the objects creation and the communication of data between the objects, etc. Okay, how normally we work when we use the CRC model? All participants in the review of the CRC model are given a subset of the CRC model index cards. There are multiple members in the team who are working using a CRC model to analyze the requirements. So the index cards which had been generated initially from the requirements in the index cards, which have been each card contains a class which has been identified from the requirement or which has been identified by the technical team as a requirement to fulfill to complete the development of the application. Index cards are given to the a set of index cards, subset of index cards. They are given to each of the reviewer in each of the team member. No reviewer should have two cards that collaborate. Okay, collaboration. If you go back to this one, these are collaborator. When the classes which collaborate with each other, take it to perform
activities to perform fulfill tasks. As we saw in the use case, okay, one use case can utilize another use case to complete functionality. So which classes will collaborate with this class floor plan, which classes will collaborate with this floor plan class to complete the functionality of the floor plan class are written on the right side. So while reviewing the CRC model, none of the team members should have two cards that collaborate. Okay, so they do none of the team member must have two cards which collaborate with each other. Must do not have two classes in hand which are collaborators. All use case scenarios and corresponding use case diagrams should be organized into categories. Okay, you can organize those use case diagrams or use cases with respect to user or with respect to functionalities. The review leader reads the use case deliberately. As the review leader comes to a named object, she passes a token to the person holding the corresponding class index card. Okay, we discussed के जो use case है that represents the functionality actually. Whatever the major functionalities of the application are, those functionalities are represented by the use cases. And we discussed that there are actors which are related to those use cases. An actor performs some functionality, an actor performs some task, or an actor is a beneficiary of a use case. So there is an actor which is connected to a use case, a functionality. So while reading those functionalities, reading those use cases, there will be coming some a named object means there are entities, okay, which are involved in that functionality, in the completion of the functionality, in the conduct or performance of that functionality. When some object is identified reading a use case, that object, if she passes a token to the person holding the corresponding class index card, so that object of that entity must be available as an index card. क्योंकि हमने we have designed those index cards, we have each of the index card that represents a class. हमने क्लासेस आइडेंटिफाई कर ली थी और हर क्लास के लिए एक इंडेक्स कार्ड बना लिया था। तो अब और हमने डिस्कस किया था शुरू में वो क्लासेस हमने रिक्वायरमेंट्स में से जो एंटिटीज थी, नाउन्स थे, प्रोनाउंस थे, जो एंटिटीज थी वहां पर, उन एंटिटीज को हमने आइडेंटिफाई किया और हर एंटिटी को एक क्लास हमने बोल दिया। तो अब जब यूज केस पढ़ रहे हैं, फंक्शनैलिटी पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि फंक्शनैलिटी जो है वो एक फंक्शन है, फंक्शनैलिटी है, that will be performed by, that will be involving some users, some entities, ठीक है। तो वो एंटिटी जब कोई यूज केस पढ़ते हुए कोई एंटिटी आइडेंटिफाई होती है तो हम उस एंटिटी के अगेंस्ट देखते हैं कि क्या इसका हमारे पास कार्ड मौजूद है या नहीं है, यानी क्या हमने इस एंटिटी की के लिए कोई क्लास जनरेट की है या नहीं की है। When a token is passed, the holder of the class card is asked to describe the responsibilities noted on the card. अब ये जो एंटिटी है इसके अगेंस्ट ऑपरेशंस लिखे हुए हैं उस कार्ड के ऊपर, तो जिसके पास वो कार्ड मौजूद है उस क्लास का, वो उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ता है, रीड आउट करता है। द ग्रुप डिटरमिन्स whether one or more of the responsibilities satisfies the use case requirement. Because this entity was found in a use case description, therefore this entity card must contain the responsibilities, the operation, the functionality depicted by the use case. So this is what we, because initially we got the requirements, we developed scenarios, we developed use cases. Now we are going to represent those requirements through a class-based model. So we want to map what we captured through use cases is actually similarly captured by the class-based model. Therefore, this activity is going to be performed. So the group determines whether one or more of the responsibilities satisfies the use case requirement. If the responsibilities and collaborations noted on the index cards cannot accommodate the use case, modifications are made to the cards. This may include the definition of new classes or the specification of new or revised responsibilities or collaborations on existing cards. तो अगर use case में जो functionality available है, functionality उस class की responsibility sets के through covered नहीं हो रही, तो it means कि either we need to have more classes to cover those functionalities, or we need to redefine the responsibilities of that class so that the functionality within the use case is captured by this class. So this is we say reviewing the CRC model, so that we have defined the classes correctly and rightly that cover all the functionalities given by the requirements description of the client.
Okay, this was a brief description of the class-based models. Okay, the only thing which I felt needs to be described explicitly was CRC model. Baki, you know classes, how the classes are defined, how the objects are defined, how the operations of those objects are defined. You have been working with these things previously. Although इसके अलावा भी even we have again for software engineering students we have a course of object-oriented analysis and design where this type of modeling will be discussed and covered in detail. So at this level, uh, descriptions, I have given a description, I have given the discussion, it is enough. Coming to data modeling, data model emphasizes on what data is needed and how it should be organized instead of what operations need to perform on the data. So this is another type of modeling. This modeling, this analysis is based on the data, how the data is organized and how the data is flowing between the objects or entities, etc., within the system. So data model is like architect's building plan, which helps to build a conceptual model and set the relationship between data items. The two types of data model techniques are entity relationship model or UML. We can define the relationship between the data through UML, or we can define the relationship between the data or flow of data between within the application or within the system through ER model. Let's see an example. There are three levels of data modeling. One is the logical data modeling, second level is the physical data model, and the third level is the create or update data, physical data model. Conceptual data model and physical data model and logical data model. There are three levels of data modeling. Okay, so you can see the conceptual data model. It has at this level we define the entities, or we define the attributes, and we define the relationships and the integrity rules. Similarly, in the physical data model, we go to the depth. ये जो entities, attributes, relationships हैं, इनकी further depth है physical data model में. We have tables and columns, keys and indices and triggers, etc. And there is a logical data model. लॉजिकल डाटा मॉडल पे नॉर्मली भी ये जो एंटिटीज या एट्रीब्यूट्स हमने डिफाइन किए हैं, तो थोड़ा सा इसकी सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी. जैसे कि हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, फिर वेरिएबल्स की हम टाइप्स डिफाइन करते हैं, ये स्ट्रिंग होगा, ये नंबर होगा, ये व्हाटएवर. तो दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ दोज वेरिएबल्स इज लॉजिकल डाटा मॉडल. तो सबसे टॉप पे कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल है जिसमें आपने एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे एंटिटीज एट्रीब्यूट्स रिलेशनशिप डिफाइन कर लिए. जब सिस्टम में आप इसको इंप्लीमेंट करने जाएंगे, चीज़ों को रिकॉर्ड करने जाएंगे, तो वो किस फॉर्म में रिकॉर्ड हो रही होंगी, वो लॉजिकल डाटा मॉडल है. और फिजिकल डाटा मॉडल इज फर्दर यानी प्योर टेक्निकल एस्पेक्ट है बैकएंड का, कि किसने अगर एंटिटीज टेबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट होंगी, फिर हर एंटिटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो उस टेबल के कॉलम्स बनेंगे. पर इसी तरह से इनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं एंटिटीज के दरमियान, तो उसके लिए हमें कीज चाहिए होंगी. आप आईटीसी में अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो इतना डिस्कशन तो आईटीसी के कोर्स में भी डेटाबेस का जब वो टॉपिक डिस्कस करते हैं तो होता है कि आप जो एंटिटीज होती हैं, अगेन जिसको हम क्लासेस भी कहते हैं क्लास बेस्ड मॉडल में, उन एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स कॉलम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं. डेटाबेस में टेबल बनता है हर एंटिटी के अगेंस्ट, और उन दो एंटिटीज के दरमियान अगर रिलेशनशिप है तो वो हम हर एंटिटी की एक यूनिक एट्रीब्यूट ऐसा आइडेंटिफाई करते हैं, विच कुड बी ए सिंगल एट्रीब्यूट और एक कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, जो कि उस एंटिटी के हर ऑब्जेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके. फॉर एग्जांपल के स्टूडेंट की एंटिटी है, तो स्टूडेंट का आईडी फॉर एग्जांपल वो हर स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से यूनिकली क्लासिफाई कर रहा होगा. So those primary keys are used to relate different entities within each other. तो वो जो टेबल कैसा होगा, उसमें कॉलम्स क्या होंगे, कॉलम में डाटा स्टोर होना है, फिर प्राइमरी कीज कौन सी होंगी, और फिर ट्रिगर्स के अगर इस डेटाबेस में जो डाटा का फ्लो है कि फ्रॉम हाउ द डाटा विल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो दैट इज थ्रू ट्रिगर्स. देयर इज सम इवेंट, कोई ना कोई इवेंट रखा होगा सिस्टम में जिसकी वजह से डाटा जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो करेगा. तो दैट इज फॉर एग्जांपल कि बच्चा जब सिस्टम आता है यूनिवर्सिटी के अंदर तो रजिस्टर होता है जिसकी बुनियाद पर उसे एक रजिस्ट्रेशन
आईडी है ना इसको मिल जाती है। पर उसके बाद जब वो फिर वो कोर्स पिक करता है, ठीक है, एडमिशन होता है सॉरी, तो उसको एक आईडी मिलती है। फिर वो जब रजिस्ट्रेशन करवाता है तो मल्टीपल कोर्सेज पिक करता है, उन कोर्सेज के अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। तो जो कोर्स की क्लास होगी वहां पे अब उसका एक रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा कि इस कोर्स के अंदर ये स्टूडेंट भी रजिस्टर है। फिर इसी तरह स्टूडेंट की जो एंटिटी है उसमें कौन कौन से कोर्सेज में वो रजिस्टर, वो एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो डिफरेंट इवेंट सिस्टम में हो रहे होते हैं, जिन इवेंट से ट्रिगर होती हैं डाटा का फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्योंकि यही जो एडमिशन के वक्त रजिस्ट्रेशन आईडी मिली थी, यही रजिस्ट्रेशन आईडी कोर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए, स्टूडेंट आईडी कोर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए यूज हो रही होगी। तो इवेंट के ट्रिगर होने पर डाटा फ्लो करता है। तो फिजिकल डाटा मॉडल पर वो ट्रिगरिंग भी यानी कि डिफाइन होती है कि हाउ द थिंग्स, हाउ व्हाट इवेंट्स will be triggered, due to which data will flow from one state to another state within the system. So you can see the in जो एक आपके क्लिप से बने हुए उसके अंदर आप ऑपरेशंस भी लिखे हुए हैं, जो कि डिफरेंट डाटा मॉडलिंग के डिफरेंट लेवल्स पर जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। क्रिएट और अपडेट है, जब आप एंटिटीज क्रिएट करते हैं डिफाइन होने के बाद फिर आप उनको अपडेट भी करते हैं, यानी कि जैसे जैसे रिकॉर्ड्स ऐड हो रहे हैं या कोई नया एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई हो गया तो वो एट्रीब्यूट आप उसमें ऐड कर रहे होते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पर वो डिफाइन होता है। और फिर आप देखिए वही क्रिएट अपडेट फिजिकल मॉडल डाटा मॉडल पर है। तो कॉन्सेप्चुअल डाटा लेवल पर ये एंटिटीज जो क्रिएट और अपडेट होनी है ये डिफाइन हो रही है, आइडेंटिफाई हो रही है। लॉजिकल डाटा मॉडलिंग के लेवल पर उनकी टाइप्स, ठीक है, वो डिफाइन आइडेंटिफाई हो रही है। और फिजिकल डाटा मॉडल पर वो एक्चुअली वो सिस्टम के अंदर वो एंटिटीज क्रिएट हो रही है विद द डिफाइंड एट्रीब्यूट्स या अपडेट हो रही हैं, ठीक है। तो ये एंटिटीज भी डिफाइन और क्रिएट और अपडेट हो रही हैं, और उसमें जो डाटा या रिकॉर्ड्स है वो भी फिजिकल डाटा मॉडल पर अपडेट हो रहे हैं। Okay, coming to a more clear picture, conceptual level पे आप देखें हमने दो एंटिटीज फॉर एग्जांपल डिफाइन की है, कस्टमर प्रोडक्ट, कस्टमर का नाम और कस्टमर का नंबर है, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट की प्राइस है, और इन दोनों के दरम्यान सेल एक रिलेशनशिप है। कस्टमर प्रोडक्ट को यानी खरीदेगा, प्रोडक्ट इज सोल्ड टू द कस्टमर, तो एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू एंटिटीज। फिर लॉजिकल लेवल पे आपने डिफाइन किया कि जब सिस्टम में हम इसको स्टोर करने जाएंगे तो हमें एक टेक्निकल डिटेल चाहिए। कस्टमर नेम स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर होगा, कस्टमर नंबर इंटीजर की फॉर्म में स्टोर होगा, सिमिलरली प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट प्राइस। और ये आप अगर देखें तो जो एरो था वो भी एक डिफरेंट पिक्चर उसकी बन गई है, बिकॉज जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो उसकी भी मल्टीपल टाइम्स होती है। कुछ वन टू वन रिलेशनशिप होते हैं, कुछ वन टू मैनी होते हैं, कुछ मैनी टू वन होते हैं। हो सकता है आपने आईटीसी के वक्त में जब डेटाबेस का टॉपिक पढ़ा तो ये पढ़ लिया होगा, वरना आप डेटाबेस के कोर्स में पढ़ लेंगे, ठीक है। हियर आई वांट टू डिस्कस जस्ट कि वो इस रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है फर्दर कि रिलेशनशिप किस टाइप का है। तो ये लॉजिकल लेवल पर आइडेंटिफाई हो गया। एंड देन कमिंग टू द फिजिकल लेवल, जिसमें कि आपने बाकायदा जो प्राइमरी की क्या होगी और यूनिक की क्या होगी उसको भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया। ये फिजिकल लेवल की डिटेल्स हैं। और वहाँ आपने स्ट्रिंग कहा था, फिर यहाँ पे उसकी एक्चुअल फॉर्म आ गई कि दिस इज वार इस कस्टमर नंबर एन इंटीजर एक्सेट्रा। So this is the physical level description. So there are these three levels which are which exist in data modeling. So we have to, this is the third type of analysis. We perform the analysis of the requirements from the perspective of the data, what data exists and how the data will flow within the system. Okay, ये again एक चार्ट है जिसपे डाटा मॉडलिंग की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। वही तीन डिफरेंट टाइप्स भी अगर आप ऑन द लेफ्ट टॉप देखेंगे, कॉन्सेप्चुअल, लॉजिकल, फिजिकल मॉडलिंग। और फिर उसके बाद गोल क्या है, यूजर पर्सपेक्टिव से डाटा मॉडलिंग क्या है, बिजनेस पर्सपेक्टिव डाटा मॉडलिंग का क्या है, how the collaboration between the team goes on while data modeling, ठीक है। from your perspective as a development team data modeling क्या है। सिमिलरली ऑन द राइट साइड यू कैन सी कॉन्सेप्चुअल मॉडल में क्या क्या चीजें होंगी, उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। फिजिकल और लॉजिकल मॉडल की थोड़ी सी दी हुई है। ये वाला जो सिंगल पेज चार्ट है जो कि समझे कि डाटा मॉडलिंग का पूरा एक बर्ड आई व्यू है। ये चार्ट अगेन मैं आई लीव इट फॉर एज ए फूड फॉर थॉट, एज ए होमवर्क फॉर यू, कि आप इसको देखें और इसको अगेन डिस्कस करें। एंड इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन यू मे आस्क, ठीक है। ये वन पेजर है जो कि पूरी डाटा मॉडलिंग का जो भी डिटेल्स हैं जो कि इसकी
इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, और डाटा मॉडलिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ डाटा मॉडलिंग, वो सारे उन्होंने एक ही चार्ट पे बहुत अच्छे तरीके से इसको सम अप किया है. So it's a homework for you, food for thought you for you. Here, this is the last slide for this short video. From next class, hopefully या तो हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ चले जाएंगे, या फिर हो सकता है कि आर्किटेक्चर को डिस्कस करें. इंशाल्लाह, see you again the next video. Thank you very much. Allah Hafiz.